Hi guys, we'll start with the next class. First of all, we'll revisit certain aspects which we did not study in the last class. Uh, One of the cases which were Fowler versus Paget. It is very important to take a note of that case as well, right? So I'll write Fowler versus Paget. Just yeah, Fowler versus Paget. Okay, basically, this case involves the concept of actus reus. Actus reus. It is basically the objective moment of the crime. मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, right? इसमें लॉर्ड केनियन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि इंटेंट एंड एक्ट मस्ट कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम. इंटेंट प्लस एक्ट मस्ट कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम. क्राइम. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. एंड सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ द क्राइम. कंकरेंस ऑफ एक्टस रियस क्या होती है हमें ये समझना पड़ा है. तो आइडियली द जनरल रूल इज दैट बोथ एक्टस रियस एंड मेंस रियस शुड कंकर, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है. However, this depends on the type of offense. For example, in theft, there must be concurrence of both mens rea and actus reus, whereas in criminal misappropriation of property, there is need not to be any concurrence of mens rea and actus reus. ठीक है, जो मैं आपको पहले बता रहा था ना कि इंटेंशन और इन सब के जो क्लॉजेज हमें पढ़ने, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों की कंकरेंस क्या जरूरी है या नहीं है. राइट. इंटेंशन वर्सेस नॉलेज का क्या फर्क होता है हमें ये भी देखना जरूरी है इन अ क्राइम. इंटेंशन क्या होती है लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए. इंटेंशन वर्सेस नॉलेज. राइट. इट इज द फिक्स्ड पर्पस और डिजायर. राइट. एंड नॉलेज इज अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस. इज व्हाट? अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्राइम. तो दोनों में डिफरेंस है. अगर आप डिफरेंस लिखेंगे इस चीज के बारे में तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इवेंचुअली in the case as well, or if you're writing it in UPSC answer or in general in your university exams as well. So this might help to gain more marks. Yeah. Right. Then what is what are the stages of the crime? वो हमें बहुत जरूरी है पढ़ना. Stages of the crime. पहला क्या होता है? मेंटल कॉन्टेम्पलेशन. ठीक है. It is not punishable per se because it is not possible to read the mind of a particular individual, of course, right? But and it will be a nightmare for prosecution to establish that during a trial if the trial takes place, right? इसके बाद जो important part है वो होता है preparation. Preparation. It eventually leads to attempt. For example, preparation में arranging for means, arrangement for means, right? इसके अलावा measures which are necessary to constitute a crime, measures which are important. ठीक है, ये सब आते हैं. थर्ड है
ऑल्दो इसमें मैं प्रिपरेशन में कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ. इवन दो प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल पर से, barring few exceptions such as section 399 of IPC or section 310 of BNS, which is dacoity. Section 310 of BNS, which is dacoity, डकैती जो बोलते हैं हम लोग, उसकी प्रिपरेशन भी एक क्राइम है. However, it is unclear as to why only a select few offences have been singled out to penalize preparation, whereas most or host of offences against human body is silent on the culpability of preparation as well. देखिए डकैती में फिर भी इसको एक क्रिमिनल नजरिए से देखा जाता है, इसकी प्रिपरेशन. उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको क्रिमिनल नजरिए से नहीं देखा जाता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों है? नो वन इज क्लियर अबाउट इट, नथिंग इज क्लियर एक्चुअली. राइट, सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, स्पेशली सेक्शन 310 सब क्लॉज 4. थर्ड थर्ड में क्या आएगा दोस्तों? अटेम्प्ट. इट इज कॉल्ड इनकोहेट क्राइम. The golden rule in IPC or BNS is if attempt to commit an offense is not made punishable, then it will be covered under section 511 of IPC or section 62 of BNS, which is the punishment of for attempting to commit offenses punishable with imprisonment of life or other imprisonment. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी बता दूंगा, एक मिनट रुकिए. अटेम्प्ट के बारे में हमने क्या बात करी है अभी दोस्तों? कि इट इज कॉल्ड इनकोहेट क्राइम. इनकोहेट क्राइम बोलते हैं इसे. ठीक है, देखिए अगर कहीं पे अटेम्प्ट, किसी सेक्शन में अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है, तो थ्रू सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस उसे पनिशेबल मान लिया जाएगा. अगर 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 इट इज फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट. मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्शन में भी क्या लिखा गया है. 62. राइट. Punishment for attempting to commit offenses punishable with imprisonment of life or other imprisonment. It is specially for attempt. Whoever attempts to commit an offense punishable by this Sanhita with imprisonment of life or imprisonment or to cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offense. देखिए जब भी मैं ये खोल रहा हूँ अपने साथ, आप लोग भी प्लीज एक हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग भी अपने पास एक रखिए. जब मैं पढ़ रहा हूँ तो साथ साथ आप लोग भी पढ़िए, इससे आपका भी फायदा होगा. ठीक है. सो So, toward the commission of the offence shall, where no express provision is made by this Sanhita for punishment of such attempt, be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to one half of imprisonment of life. बेसिकली आपको ये पूरा तो लिखना नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि अटेम्प्ट भी पनिशेबल है. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस बारे में हमने बात कर ली है. अटेम्प्ट डिफाइंड नहीं है. अटेम्प्ट डिफाइंड नहीं है. अटेम्प्ट इज नॉट डिफाइंड अंडर द स्टैट्यूट. इस बात का हमें ध्यान रखना है. और so yeah, that is it. Next we have to also go through a few things which is section 1(3) of BNS. कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पहले समझने पड़ेंगे, ताकि जब हम आगे बढ़े तो हमारे लिए इजी रहे समझना चीजों को. 1(3), every person shall be liable to punishment under this sanhita and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof which he shall be guilty within India. Basically लोकेलिटी ऑफ ऑफेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो पनिशमेंट एंड ट्रेंड्स पे आ गए. देखिए स्टेजेस मैंने आपको पढ़ा दिए: intention, preparation, attempt. Then eventually, fourth stage is what? Commission. Right. So this was it. Attempt मैंने आपको बताया है. It has not been defined anywhere in the IPC or BNS or BNS. Right. According to
According to Stephen, an attempt is an act done with intention to commit a crime. Intention to commit a crime, forming series of acts which, if not interrupted, would. हाँ मतलब अटेम्प्ट तो इंटरप्ट करोगे तो भाई इवेंचुअली वो एक क्राइम ही हो जाएगा. डेफिनेशन क्या है? इट्स एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस व्हिच फेल्स ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑफेंडर्स विल. सिंपल, वेरी इजी, राइट. अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए. ठीक है, ये भी मैं पढ़ा देता हूँ. मेयर प्रेपरेशन इज नॉट पनिशेबल. एक्सेप्शन इज अंडर सेक्शन 149 एंड 122 ऑफ द आईपीसी. 178 में भी है, और 310(4) और 399 में भी. जो डकैती का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो वाला सीन है. अब हमें हमें बीएनएस के सेक्शंस लिखने हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा. मैं आपको बता देता हूँ कि बीएनएस के कौन से सेक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे. एपीसी सेक्शन 149, बीएनएस सेक्शन 190, 190, which is in respect to what? Which is in respect to unlawful assembly. Unlawful assembly. Then we have 122, collecting arms, etc., with intention of waging war. ये लिखा गया है कौन से में? 149 में. कलेक्टिंग आर्म्स. ये दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा. देन सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सही लिखा है. क्रिमिनलाइजेस अटेम्प्ट टू कमिट, जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है अभी. ठीक है. इसके बाद टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट फ्रॉम प्रिपरेशन. ये टेस्ट है एक, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ अभी. राइट, सेकेंड. यस, या. फर्स्ट टेस्ट इज ऑफ प्रॉक्सिमिटी. The acts should be sufficiently proximate to the commission of the intended offense. Proximity is not ascertained strictly in terms of time or space, but in terms of intention. देखिए, चार तरीके से हम डिस्टिंग्विश करते हैं अटेम्प्ट को प्रिपरेशन से. अटेम्प्ट का मतलब होता है वन वे फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ अ क्राइम, राइट. प्रॉक्सिमिटी इज बेसिकली द एक्ट which is eventually not under the spectrum of crime. It is lower than a crime, but yes, it it draws a thin line between attempt and preparation. That is what the Kavi is trying to say here. मैं आपको फिर से समझा देता हूँ. The act should be sufficiently proximate to the commission of the intended offense. Proximity is not ascertained strictly in terms of time or space, but in terms of intention. ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में आप इस बात का ध्यान रखना है कि इंटेंशन का प्रोस्पेक्ट आता है ज्यादा. इंटेंशन प्लस प्लस प्लस, राइट. देन another test is of locus poenitentiae. It's a Latin word. Please pardon my pronunciation. Right. An act is equals to mere preparation if a person had a chance to repent and abandon his course of action before committing the offense, and the acts done until that point would be completely harmless. ठीक है. An act is equals to mere preparation if a person had a chance to repent and abandon his course of action before committing the offense. ठीक है. ये अगेन एक लाइन ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर देता है हमारे लिए. ठीक है, अबैंडनमेंट इज अ डिफेंस ओनली व्हेन फर्दर एक्शन इज freely and voluntarily abandoned and not under the compulsion. Right? Very simple. Course action before the committing the offense, an act done until that point would be completely harmless. देखिए, एक लोकस मतलब एक पॉइंट तक एक एक्ट हार्मलेस रहता है, लेकिन उसके बाद अगर जो एक्ट हो गया वो हार्मलेस नहीं रहा, तब जो थिन लाइन है ना अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच की, वो ब्रेक हो जाती है. सो दैट इज व्हाट द कवि इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. Third, of impossibility. An impossible act or a defective course of action obviates the possibility of a successful attempt
and hence is not culpable unless the impossibility is due to a factor beyond person's control. ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्ट बंदा कोई करने जा रहा है, ठीक है, सक्सेसफुल अटेम्प्ट करना भी चाहता है उस चीज की, लेकिन खुदा ने ये बोला कि भाई अभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है, और उस इम्पॉसिबिलिटी की वजह से अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच की लाइन क्रिएट हो जाती है, सिंपल. सोशल डेंजर, where the act is attempted, is so inherently dangerous that even though it fails, it creates social alarm or causes a sense of insecurity or threat in the society. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्ट अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन एक अलार्म क्रिएट हो गया, ठीक है, वन अलार्म इज क्रिएटेड एंड ड्यू टू दैट अलार्म द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रेक द लाइन बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, राइट. काउंटर फीटिंग का बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, waging war versus government in section 152 of the Bharatiya न्याय Sanhita, which I think is about sedition, if I'm right. Give me a second. Yes, it are the acts endangering sovereignty and unity of integrity and unity of India. वही है जो मैं सोच रहा था, ठीक है. The act must clearly and unequivocally demonstrate beyond reasonable doubt the intention of the accused. ये इक्वालिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे क्रिएट हो गया. देखिए, रीजनेबल डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए जब भी कोई एक्ट कमिट कर रहा है कोई क्राइम का. So there should not be a reasonable doubt in respect to the intention of the accused to commit the offense. If that has been done, again the line will come in between attempt and preparation. तो ये सारे circumstantial evidence में बहुत काम आती हैं चीजें, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये सब पढ़ाई है. ठीक है, यहाँ पे केसेस लिखे हैं, बट मुझे भी पता है कि याद नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे मलकियत सिंह का जो केस है ये बहुत बारी मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, असगर अली का केस भी मैं पढ़ाऊंगा, तो इन सब ये सब काम आएंगे ही आपके इवेंचुअली, जितना मुझे लग रहा है, राइट. तो जयप्रकाश वर्सेस स्टेट का तो इसमें नहीं होगा, या नॉट येट. तो जो केसेस हैं यहाँ पे लिखे मैं आपको पढ़ा देता हूँ. महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, ठीक है, ये चार केसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट. उसके बाद है अटेम्प्ट टू सुसाइड का प्रोस्पेक्ट, जो भी हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, राइट. अब अभी हम एक बार ना पहले पीवाई क्यूज देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है. 2021 में क्वेश्चन आया था, हैज अटेम्प्ट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन आईपीसी, विच नो. What are the various tests for determining whether an act amounts to preparation or attempt to commit an offense? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. और in order to constitute a criminal attempt, the act cause must be proximate to the intended result. देखिए, theory of proximity आगे जो हमने पढ़ी कि proximity कहाँ से होगी, through intention, ठीक है, to the intended result. Explain the observation with the help of decided case laws. चलिए अब हम केस लॉस पढ़ते हैं. It is a famous smuggling case. The accused was caught by the police at the seashore before the vessel could approach and before the bags with silver could be loaded onto the ship. An attempt is a mixed question of law and fact. The stage of attempt is reached when the accused takes overt steps towards the commission of step. देखिए, अब पूरा स्पेक्ट्रम आपको समझना पड़ेगा. क्या था स्पेक्ट्रम आपको पता है. अटेम्प्ट कब होगा, जब अक्यूज्ड टेक मोर एंड ओवर्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. वो बढ़ रहा है, रुका नहीं है, बढ़ता जा रहा है, जिंदा है तो. सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बीच बीच में फनी होने का ट्राई करता हूँ दोस्तों, सॉरी. बट या, सच ओवर्ट एक्ट और स्टेप नीड नॉट टू बी पेनल्टीमेट एक्ट. वो आखिरी एक्ट नहीं होना चाहिए. फिर भी अगर उसने एक स्टेप फॉरवर्ड भी लिया है उस चीज के लिए, मतलब एक मैलिफाइड इंटेंशन उसके दिमाग में क्रिएट हुई है, तो उसको हमें ध्यान रखना है, as long as it is proximate to it. A narrow interpretation of attempt would defeat the efficacy of the penal provisions to prevent smuggling. Right. Uh, Abhyanand Mishra versus State. Mishra ji was a student, created a bogus certificate with the intention to cheat and filed a false application using this certificate. However, he was caught before he could attempt his examination. ठीक है. The stage of preparation was complete when he had
to complete the application. Attempt to commit the offense began when he dispatched the application to sit for the exam. ये attempt पूरा हो चुका है जब उसने भाई वो dispatch कर दिया, मतलब attempt हुआ है. This while the attempt was not proximate in time and space, it was proximate to the intention of the accused. Very important. State of Bihar. अब state of Bihar, lovely, beautiful state. एक सर हैं यूपीएससी पढ़ाते हैं, वो स्टेट को स्टेट नहीं बोलते, बिहार को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार बोलते हैं. मतलब इतनी बेहतरीन जगह है. लेकिन स्टिल बिहार needs to work a lot. I hope the elections which will happen soon enough can be good for them, should be good for them. I feel that. Asghar Ali versus Emperor. Asghar Ali gave his wife some drugs thinking that they will cause miscarriage. However, no poison was detected in the liquid, thus he had administered a harmless substance. Held that accused act did not amount to an act towards commission of the offense. Principle क्या है? If the act of the accused is intrinsically useless, it cannot constitute an attempt towards the commission. अगर useless act है तो वो अटेम्प्ट नहीं होगा. ठीक है, ध्यान रखिए. नेक्स्ट, मलकियत सिंह वर्सेस पंजाब. लोकस पॉइनेटेंशिये का जो मैंने आपको बताया था मैक्सिम पहले. मलकियत जी, intending to illegally smuggle shipments of wheat from India to Pakistan, was driving his truck towards the border. He was caught about 40 kilometers before. The court applied the test of locus ponentiae. रियली सॉरी, मैं इसको 5 साल पहले भी नहीं बोल पाता, अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ. I'll try to work more hard. मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का ढंग से बोलने की कोशिश करूंगा. Held that the act of taking the shipment was mere preparation, as there was ample of scope for him to change his mind. Right? That's done up to a point where completely harmless. ठीक है, अटेम्प्ट नहीं हुआ, इसे प्रिपरेशन पे आके रुक गया. यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है. इसके बाद केस है आर वर्सेस टेलर का. टेलर wanted to set fire to X's haystack. Before he could set it right, he saw someone notice him and douse the matchstick. In this case, test of proximity was applied to find him guilty of the attempt. So A goes into a shop with some original and some counterfeit notes. Therefore, he could exchange the counterfeit notes for goods. He is caught applying the doctrine of locus poenitentiae. Yes. It can be held that an attempt was not yet made, and the act of walking onto the store with counterfeit notes was mere preparation. Right? Thank you. Now, attempt to suicide. Important thing might come soon enough. पहले था 309 में, लेकिन अब omit हो चुका है. But it is noteworthy that Section 115 of Mental Health Care Act has already effectively decriminalized the attempt to commit suicide. मतलब वो पहले ही हो चुका है, ठीक है, through another statute. So the attempt of suicide has already been decriminalized in 2017, but under our criminal law and the statute, it was decriminalized through BNS, which was last year per se. Okay. However, new section 226 has been added. Attempt to commit suicide to compel or restrain exercise of lawful power. So 226 का टेक्स्ट क्या कहता है? Whoever attempts to commit suicide with the intent to compel or restrain any public servant from discharging his official duty shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both, or with community service as well. ठीक है, पुराने केसेस हैं. ज्ञान कौर का मेरे हिसाब से हमें पढ़ लेना चाहिए. इट वाज अ 5 जज बेंच which overruled P. Rathinam and recriminalized suicide. Right to life extends till natural life of a person. An overt act towards taking one's own life cannot be said to be protected under right to life. ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आएगा नहीं. अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 109 में है, पहले 307 में था. whoever does any act with such intention or knowledge. इंटेंशन आ गया वापस. अब देखिए, आपको ये सब चीजें पढ़नी जरूरी है. जहाँ इंटेंशन और नॉलेज आ गया, मतलब वहां पे मेंस रिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी. मेंस रिया. And under such circumstances, that if he by the by that act causes death, okay, death, he would be guilty of imprisonment
लेस देन 10 years and fine, greater than 10 years and fine. Om Prakash versus Punjab का केस है. What section 307 requires is that the accused must do an act with such guilty intention or knowledge and in such circumstances that, but for some intervening act, that act would have amounted to murder in normal course of event. देखिए, किसी ने कोई इवेंट किया, एक्स बंदे ने कोई एक्ट किया, ठीक है, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स रहते तो वो मर्डर होता, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे इसको अक्यूज करा जा सकता है. अगेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किस तरीके से चीजें क्रिएट होती है उस पर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं. राइट. आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो. बहुत ही थॉरली समझाने की कोशिश करी और बहुत ही मिनिमलिस्टिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों का भी फायदा हो. ठीक है. खुश रहिए दोस्तों. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. LSS. हैव अ ग्रेट डे. If you don't like, share, and subscribe, it's totally fine as well. Have a great day.